Good morning. I am Harmeet Kaur from BCom SF 5th semester from Sanatan Dharm College, Ambala, Kent. Today, I am presenting a topic tax invoice under GST section 31. Before start our topic, I would like to explain the meaning of invoice. Invoice is an important commercial instrument which is issued by a seller to a buyer. It contains all the information regarding the trading parties, quantity of items sold, prices, discount, delivery, and payment terms. Now, some provision related invoices for different situation in GST law. First one, tax invoice in respect of goods section 31 subsection 1. A registered person supplying taxable goods shall issue invoice within following time limit. First, before or at the time of removal of goods, which means जब गुड्स को रिमूव किया है या गुड्स को डिस्पैच के लिए रिमूव या उसकी मूवमेंट की गई है, उसके बाद हम इन्वॉइस इशू नहीं कर सकते, हमें उससे पहले पहले ही इन्वॉइस को इशू करना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, विच मीन्स जो रेसिपिएंट को गुड्स अवेलेबल हुए हैं उस डेट पे उससे पहले पहले ही हमें इन्वॉइस को इशू करना पड़ेगा. Tax invoice in case of supply of services section 31 subsection 2, which means for services invoice tax shall be before or at the time of within 30 days, means जब सप्लाई की है उसके 30 डे के अंदर अंदर इन्वॉइस इशू कर सकते हैं. नेक्स्ट, within 45 days if supply is bank, insurer, NBFC, within 45 days invoice shall be issued. Next we have revised invoice section 31 subsection 3a. Revised invoice time limit to issue is within 1 month from the date of issuance of certificate of registration for transaction is taken place during transition period, which means period between the date of application for registration and the date of issuance of registration certificate. Then benefit of issue of revised invoice help customer to get the benefit of ITC. Next we have no need to issue a tax invoice section 31 subsection 3b, which means a registered person is not required to issue tax invoice if the value of goods or services or both supplied is less than 200 rupees. Next we have bill of supply section 31 subsection 3c. Issue of bill of supply in case of exempted supply in case of taxes paid under section 10. Details of bill of supply. Supplier information includes name, address and GSTIN of the supplier, serial number. A bill of supply shall contain a consecutive serial number in one or multiple series containing alphabet, numerical, special character, etc. Date of issue, information of registered recipient, code of goods and services. A bill of supply shall contain HSNN code of goods or accounting code for services, description of goods or services, value of supply. A bill of supply shall contain value of goods or services or both taking into account discount if any, signature or digital signature of the supplier or his authorized representative. Next we have no bill of supply issued for small value of supply. Means that registered person may not issue a bill of supply if the value of goods or services or both supplied is less than 200 rupees. Next we have recipient voucher section 31 subsection 3d. When issued on receipt of advance payment with respect of any supply, why issued receipt as evidence of receipt of such advance of payment. Next we have refund voucher section 31 subsection 3e. When a registered person advance payment and has issued receipt voucher to recipient but he did not issue invoice
or made supply in the future, then he shall issue refund voucher for the same. Next, we have invoice in case of reverse charge mechanism, section 31, subsection 3 F, issued by recipient in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both. Payment voucher in case of reverse charge mechanism, section 31, subsection 3, which means registered person who is liable to pay tax under reverse charge mechanism issue a payment voucher at the time of making payment of the supply. Next, we have continuous supply under GST law, continuous supply of goods, continuous supply of services. Time limit to issue invoices under continuous supply. In case of continuous supply of goods, section 31 4 successive statement means, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिल्डिंग को पूरा करने के लिए एक सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवा रही है कंपनी, ये सप्लायर हर मंथ एक स्टेटमेंट तैयार करेगा कि 10,000 ब्रिक मंगवाई है, 50 kg सीमेंट मंगवाया है, एक्सेट्रा. इस मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, और स्टेटमेंट देगा, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ. मतलब हर मंथ हमारे पास एक सक्सेसिव स्टेटमेंट आती रहेगी. ये क्यूमुलेटिव नेचर की होती है, लाइक कि एक मंथ में अगर 50 हैं प्लस इस मंथ अगर 30 है तो 50 + 30 80 हो जाएगा. मतलब हर मंथ ऐड होता रहेगा. इन स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो हम पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव स्टेटमेंट आर इन्वॉल्व. और जब स्टेटमेंट मिली और फिर जब पेमेंट कर दिया, तब उनमें से जो भी काम पहले होगा हम उसे बोल देंगे कि वो हमारा लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है. नेक्स्ट वी हैव in case of continuous supply of services, section 31 subsection 5 ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज़ अनसर्टेनेबल, विच मीन्स जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन होती है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो होती है वही हमारी लास्ट डेट होती है इनवॉइस को बनाने की. नेक्स्ट वी हैव ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज़ नॉट अनसर्टेनेबल, विच मीन्स कि जब हमारे को असर्टेनेबल नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तब जो इनवॉइस इशू होगा बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव द पेमेंट. नेक्स्ट वी हैव ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, सेक्शन 31 सबसेक्शन 5C. तो उस केस में जो इनवॉइस इशू होगा ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट होगा. नेक्स्ट एंड लास्ट इज invoice in case of goods sent on approval for sale or return, section 31 subsection 7 earlier of at the time of supply or 6 month from such removal. For example, 25 दिसंबर 2020 को मैंने गुड्स सेल किए एक कंडीशन पे कि अगर गुड्स नापसंद आए तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप मुझे रिटर्न कर देना, विच मीन्स कि 2 मंथ के अंदर अंदर आप मुझे कन्फर्मेशन दे देना कि आपको वो गुड्स रखने हैं. तो 25 दिसंबर 2020 को हुआ रिमूवल ऑफ गुड्स. सामने वाले बंदे ने मुझे 15 जैन 2021 को कंफर्मेशन दिया. जब वो मेरे को कंफर्मेशन देगा, मतलब तब उस डेट पर असल में सप्लाई हुआ. 25 दिसंबर 2020 इज़ रिमूवल डेट एंड 15 जनवरी 2021 सप्लाई का असली डेट है. अब इनवॉइस लास्ट डेट ऑफ इशू होगी जब सप्लाई हुई, मीन्स 15 जैन 2021 या 6 month फ्रॉम सच रिमूवल, दैट इज़ 25 जून, विच एवर इज़ अर्लियर. So that's all my today's topic. Thank you so much.